Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is understanding diversity. Learning topics. India, a land of diversities, unity in diversity. Diversity is a fact and is found in all walks of life. We can see various forms of diversity: social, cultural, political, economic and geographical environment. People are different from one another in many ways. We do not look exactly like each other. We also differ in terms of the languages we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals that we follow, etc. Diversity enriches and enlivens the whole spectra of our society. India provides the prismatic spectrum of diversity. However, the threads of diversity weave the wrap and weft of our impregnable unity. इंडिया एक बहुत ही बड़ी डाइवर्स कंट्री है. आपकी अलग अलग जगहों पर लैंग्वेजेस अलग है, रिलीजियस कल्चर्स अलग है, खाने का तरीका अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, और इन्हीं सब में जो अखंडता में एकता है वो हमारे देश में ही दिखती है. India, a land of diversities. India is a land of diversities. Many different social groups can be seen in India. They speak different languages, eat various kinds of food, have different habits and believe in different ways of praying. तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, अलग अलग भगवानों को पूजते हैं, पूजा करने का तरीका भी अलग अलग है. तो इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज देखी जाती है. From early times, people travelled in search of food and livelihood. While looking for more fertile lands, they had to change their old lifestyle in order to adopt to new place. Thus, they formed new habits and customs. As a result, their language, food, religion and customs became a mixture of the old and the new. People began to trade with other groups in different places, and thus many of them were influenced by the lifestyles of that place. Different religions developed diverse cultures. Historical developments shaped and influenced different social groups. These differences can be divided into economic, social, political, cultural and religious. तो पुराने टाइम से ही जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते थे लाइवलीहुड के लिए, बट इन ऑर्डर टू हैव अ सेटल्ड लाइफ ज़रूरी था कि एक जगह पर रुक कर वो सेटल्ड लाइफ जिए. उसके लिए उनको अपनी हैबिट्स चेंज करनी थी. तो इसी तरीके से हैबिट्स चेंज हुई, नई और पुरानी आदतें मिलकर नए नए रिलीजन्स का, नए नए कल्चरल एक्टिविटीज़ का संगठन बना. Number 1. Economic diversity. Geographical and climatic conditions determine the economic activities of a region. For instance, people living near the coast would be engaged in fishing, whereas those in the plains would be growing crops. People living in the hills or deserts will be engaged in other occupations. तो किसी भी जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके रीजन पे डिपेंड करता है. जैसे जहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्रॉप्स ग्रोइंग नहीं हो सकता. जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ के लोग फिशिंग ज़्यादा करेंगे. जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा उगाए जाते हैं. जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, जहाँ पे गर्मियाँ होती हैं अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं. Thus, the dress, food and habits would be different depending on the regions they live in. India's culture is ever changing, always adapting to changes caused by internal factors or contact with external cultures and adopting new elements from other countries. Today, in the age of aeroplanes and emails, in an age when traveling for work or leisure has become more common, faster and easier, there is a steady exchange of cultural traditions. We carry our traditions to new places and also adapt to the ways of life of that place. और ये जो अलग अलग डाइवर्सिटी आई है हमारी कंट्री में, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आई है. अंदर ही अंदर अलग अलग टाइप के लोग हैं, बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में लोग आए जिनकी वजह से कल्चरल डिफरेंसेस हुए हैं, और पूरा हमने अपना माइंडसेट भी ओपन रखा और चेंजेस अडेप्ट भी करे, और जहाँ पे जाते हैं वहाँ के लोगों को अपना कल्चर भी सिखाते हैं और वहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट कर लेते हैं. नंबर 2, सोशल डाइवर्सिटी. Caste system is found in India only. From ancient time, the society was divided into 4 main castes according to their deeds. Ancient traditions led to the emergence of caste system. According to it, a particular caste should perform a particular function. The next generation should follow the same occupation which its forefathers used to perform. Over a period of time, it gave rise to the feeling of superiority to castes of higher ladder and distrust and hatred for the caste of lower ladder.
The so-called higher castes exploited the caste system in their own interest. The caste system exists in society till date in India. There are higher class and backward class of people in society. तो हमारी कंट्री में ही कास्ट सिस्टम देखा जाता है, पूरे वर्ल्ड में और किसी भी कंट्री में कास्ट सिस्टम नहीं है। एंशियंट टाइम से ही 4 पार्ट्स में कास्ट सिस्टम को डिवाइड करा गया है, जिसमें कि लैडर के सबसे टॉप मोस्ट जो लोग हैं वो खुद को सुपीरियर मानने लग गए थे धीरे धीरे, और लैडर के ही जो नीचे लोअर कास्ट वाले लोग थे वो खुद को इंफीरियर मानने लग गए थे। और ये कास्ट सिस्टम के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी कंट्री में टिल डेट आज तक देखा जाता है। Quick facts. Every society has its own cultural means by ideas, customs and arts. All classical dance forms are based on stories from epics. तो हर एक सोसाइटी का, इंडिया हो चाहे कोई और कंट्री हो, हर एक सोसाइटी का अपना कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज होती हैं। इसीलिए उनके जो डांस फॉर्म्स भी होते हैं वो कोई ना कोई एपिक्स की स्टोरीज डिपिक्ट कर रहे हो। नंबर 3, कल्चरल डाइवर्सिटी. Culture is a set of features of society or a social group. It includes, in addition to art and literature, lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs. Respecting and safeguarding culture is a matter of human rights. Cultural diversity presupposes respect of fundamental freedoms: freedom of thought, conscience and religion, freedom of opinion and expression, and freedom to participate in the cultural life of one's choice. तो cultural diversity में सिर्फ आपका आर्ट और लिटरेचर नहीं आता है, बल्कि लाइफस्टाइल, जिस तरीके से आप जिंदगी जीते हैं, कौन सा रिलीजन आप प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीजें भी कल्चरल डाइवर्सिटी में आती है। और हमारी जो कंट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है कि हर एक इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, उस हद तक जहां पर वो किसी को भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। नंबर 4, language diversity. In our country, there are 22 regional languages recognized by the Constitution of India. Also, there are regional variations that change every 30 kilometers or so. The 22 regional languages are Hindi, Punjabi, Sindhi, Gujarati, Marathi, Bengali, Odia, Assamese, Urdu, Sanskrit, Kashmiri, Tamil, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथली, मैथिली, बोडो एंड डोगरी। तो हमारी कंट्री में टोटल 22 लैंग्वेजेस को रिकग्निशन दिया गया है। हर 20-22 किलोमीटर के बाद ये जो लैंग्वेजेस है, डायलेक्ट है, ये चेंज होते रहते हैं। इतना डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। कुछ आपकी जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनके सारे नाम आपको यहाँ पर मेंशन्ड हैं। English language continues to be used for official purpose within the state for which it was being used immediately before the commencement of the Constitution. और हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने से जस्ट पहले इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकग्निशन दिया गया। नंबर 5, religious diversity. Religion in one form or another plays a part in the lives of most of the world's population. At times it dictates what they eat, where they live, what they wear, who they marry and how they think. Inspired by the same religious impulse, believers do different things. Buddhist monks shave their heads while many Sikhs never cut their hair at all. तो आपकी रिलीजियस डाइवर्सिटीज भी अलग अलग है। कौन से भगवान को आप मानते हैं, कौन सी आइडियोलॉजीज आप फॉलो करते हैं। जैसे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो अपने सर को पूरा का पूरा साफ कर देते हैं, यानी कि सारे बाल हटा देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सिख होते हैं वो अपने बाल कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं काटते हैं। तो रिलीजियस बिलीव्स भी हर अलग अलग जगहों पे डिफरेंट हैं। Some worship with loud music and vibrant dance, while others sit still in complete silence. And while some religions will hold out the promise of a future life in the hereafter. But one thing is common to all of them. All religions encourage a life requiring goodness, kindness and harmony. हर किसी का रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का तरीका बेशक अलग हो सकता है, लेकिन सारे रिलीजन्स में, कोई भी रिलीजन हो ऑल अराउंड द ग्लोब, सबका एक क्रक्स ये निकलता है कि आपकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, काइंड होना चाहिए, एकता भावना सब में होनी चाहिए और हमेशा दूसरों के प्रति हमारे मन में दया भावना होनी चाहिए। People have the freedom to follow any religion. The main religions today are Hinduism, Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, Christianity and Zoroastrianism. तो आपके रिलीजन आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेन रिलीजन्स जो आज तक देखे गए हैं वो हैं हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड ज़ोरास्ट्रियनिज्म।
We go to different places to pray, but we pray to the same God. The Hindus pray in a temple, they perform puja, they offer sweets and flowers. The main holy book of the Hindus is the Bhagavad Gita. The Muslims pray in a mosque, their holy book is the Quran. They offer namaz, prayers 5 times a day. The Muslim women pray at home. The Sikhs pray in a Gurudwara. The holy book of the Sikhs is the Guru Granth Sahib. The Sikhs sing hymns called Gurubani. The Christians pray in a church. They pray to Jesus Christ and Mother Mary. The Bible is the holy book of the Christians. We are all the children of one God. तो अलग-अलग religion के लोग अलग-अलग भगवानों की पूजा करते हैं, होली बुक्स उनकी अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से वो प्रे करते हैं, लेकिन सबका क्रक्स मेन पॉइंट एक ही निकलता है कि एक ही भगवान की पूजा करते हैं और हम सभी एक ही भगवान के बच्चे. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. द डाइवर्सिटी दैट इज फाउंड इन आवर कंट्री गिव्स आवर नेशन अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड फूड हैबिट्स, वी हैव एन अंडरलाइंग यूनिटी. Also, there is an element of interdependence among these communities which bind us together. Despite of having all these diversities, cultural, language, religious, कितनी भी diversities हों, लेकिन in some or the other way, all the people are interdependent. एक दूसरे पे निर्भर हैं कुछ ना कुछ करने के लिए. The village community supplies food to the towns and cities and is dependent on the urban communities to supply it with clothes, electricity, machines for agriculture, etc. Thus, we depend on each other for various needs. The interdependence is what forges a link and a bond of unity. Interdependence exists beyond the boundaries of our own country. तो आपके जो अलग अलग टाइप के विलेजेस होते हैं, विलेजेस सिटीज़ पे अलग अलग चीज़ों के लिए निर्भर होते हैं. सिटीज़ और टाउन्स के लोग भी अपने क्रॉप्स के लिए, वेजिटेशन पर्पसेस के लिए गांव वालों पे निर्भर होते हैं. और आपकी कंट्री से बियॉन्ड भी ये लिमिटेशंस चली जाती हैं. अलग अलग कंट्रीज भी दूसरी कंट्रीज पे रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट होती हैं. Trade and services between different nations help in economic development of each. In order for the world to be peaceful, we need to respect the cultural diversity of other communities. In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru wrote about the variety and unity of India, and he coined the phrase unity in diversity. तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में भी ट्रेड का यही मेन मोटिव होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हर एक कम्युनिटी की आप रिस्पेक्ट करें. और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब में यही मेंशन किया था इंडिया की अखंडता को देखते हुए कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसमें भी एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. He said the diversity of India is tremendous, yet with all the differences, people have retained their peculiar characteristics for hundreds of years and have been throughout these ages distinctively Indian. तो जवाहरलाल नेहरू ने एग्जैक्टली ये कहा था कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की, वो सबसे ज़्यादा अलग है. सारे लोग अलग भी हैं, अपने पेक्यूलर स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स को भी नहीं छोड़ते हैं और उसके बावजूद भी इंडियन हैं. Recap. India is a land of diversity and many different religious groups, sects, castes and races are found here. Diversity is an enriching experience. There is an underlying unity that can be seen in India. India's culture is ever changing, always adapting to changes. There exists a caste system in Indian society. Many languages are spoken in various regions of India. These languages are considered to be evolved from Sanskrit language. India is a land where unity and diversity go hand in hand. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिया में कितने अलग अलग टाइप के कास्ट है, रिलीजन है, कम्युनिटीज हैं, उसके बावजूद भी सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. स्टूडेंट्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.